of Haryana, Director IIM Rohtak, Professor Dheeraj Sharma, esteemed faculty members, deans, Dean Academic and Dean Research and Executive Education, Professor S.K. Pandey and Professor Kaustav Ghosh, and dear students. Today we have gathered here to celebrate grand occasion of inauguration of the academic session of 11th batch of flagship program of IIM Rohtak, postgraduate program in management. It is an honor and privilege to welcome the new batch to IIM Rohtak community. I am sure your journey with IIM Rohtak in next 2 years will be enlightening and filled with knowledge sharing and value system. I am sure together you will bring something new and exciting to diverse learning community. Now I would like to invite the student representative, Madhurima Mishra, who will facilitate the pledge of PGP first year students. Madhurima. Sure, ma'am. Thank you. Now I would request all the students to take the pledge with me that is being displayed on the screen. You may keep your microphones off to avoid disturbance. I, Madhurima Mishra, a student of Indian Institute of Management Rohtak, pledge today voluntarily to conduct myself in a manner that is socially responsible, ethically correct, morally upright, and environmentally sustainable. I commit myself to respect and uphold the traditions and values of Indian Institute of Management Rohtak and enhance collaborative learning. I will earnestly endeavor to be truthful, trustworthy, and rule-abiding in all my actions to preserve the dignity and prestige of my nation and my institution, and to be a worthy member of the IIM Rohtak community. I pledge myself to achieve the lofty vision of IIM Rohtak to be a global leader and fulfill its mission to develop leader managers with an unflinching professional focus, uncompromising adherence to values, and unparalleled social commitment. Thank you. Thank you so much, Madhurima. Today we are honored to have with us Shri Manohar Lal, Honorable Chief Minister of Haryana. We also have the presence of Principal Secretary to Chief Minister, Shri Rajesh Khullar. I would now request Shri Rajesh Khullar to kindly introduce CM Sir to us. First hand or second hand, how he has over the last 5.5 years, close to 6 years, changed the total social cultural milieu of the state, and the corona crisis notwithstanding, how the economic reforms agenda he has accelerated to the maximum possible, even as the macroeconomic stability has been maintained. These are very uncertain times, and for each one of you, I can't imagine a group of such young, smart people ever before who were so happy, who would have been so happy to have made to such a prestigious institution, yet are feeling so uncertain about their future. Where is it going? Will the classes ever begin on the campus? And what will it go on for the next 2 years like this? What would be the job scenario? What would be the placement scenario? Is the institution capable of evolving itself so much, just in case this crisis keeps you away from the campus for longer? Can it every day figure out what more skills need to be given to you and which best way, so that you can, once you get your MBA degrees, you are able to find good placements and work. Now, the best person, I would say, if they would have gone around and tried to choose, apart from, see, the CM is here because he's the CM. So that is the highest that it gets. That is where the buck stops. So, yeah, on a personal level, since I have had the big fortune of working with him for 4.5 years, trust me, I can tell you, you could not have found a person more,
found a person younger than him at heart and clearer in head than him to guide you through the coming days, weeks, and months by his words. His deeds speak much, much more than his words do. That is what I've observed. He takes a nanosecond to, he's the biggest iconoclast I have met. He can change. I mean, he thinks nothing of changing an enactment, changing a policy, changing a rule, mid-course, as long as, it is serving the public good. And the courage that it takes, the political conviction that it takes to do the right thing. Let me give you only one example. Which pertains to this corona crisis. You people come from all over the country. Haryana had really not got very, very many people who were, what we call migrant laborers who were, from other states and were working in Haryana. There were many, but not as many as in Maharashtra, not as many as in Gujarat, not as many as in other states. Yet the geographical location of our state was such that people who decided to go back home, however, whatever mode they could, whether they were wanting to walk, whether they were wanting to go on bicycles, or whichever way, we have all heard so many tragic stories. But maybe 4 times that number, those who live in Gurgaon, those who live in Haryana and belong to other states, more than 4 times that number were in Punjab, in Rajasthan, in Gujarat, and other states, and they were going through Haryana, and they got stuck. So we have so much feedback from all over the country, from Bihar, from UP, where people say that they traverse the length and breadth of this country, and it was very tough times for them. But they say that the amount of respect that they got, the amount of care that they got was, Haryana, it was the best in Haryana. Now, that could all happen because almost instantaneously, almost in a jiffy, he created the digital governance structures to cater to their needs. Even at this moment, I do not know, you come from so many other states, you can cross-check with the status in your states and compare it with the truth as we know it here. Your professors will tell you how correct that is, that we are almost at this moment, beginning the corona crisis, running a dynamic census of the state day to day. Every single day, all the deaths that take place, COVID or no COVID, whatever the reason, all the births that take place, they're getting registered in our database. We have a database of over 15 lakh families who we know are earning less than 1,80,000 rupees per annum. They were all given every week financial assistance of 1,000 to 2,000 rupees, depending upon various classes, beginning 1st of April, probably beginning 15th of March, and every week, and all their ration supplies. There were so many lakhs of families who were otherwise were known as APL families, which is the green ration card holders. That is, they didn't have they come in 4 varieties, as you know. The yellow card for BPL people, the pink card for Antyodaya, Anna Yojana, and the khaki card for other priority households. These 3 categories are covered, as some of you might know, under the National Food Security Act, where they're entitled to something like 5 kg of food grains per month, or maybe at a notional 1 rupee, which government said would be free during the corona crisis. Apart from them, lakhs of families who had green cards, who otherwise APL, who had nothing from the public distribution system, they were identified and they were given distress ration coupons, which they could exchange and get the same assistance in terms of their food grain and the pulses requirement and sugar at practically free of cost again. All that could happen because there was a way and an absolutely vibrant, dynamic way of reaching every single family, every single day, and figuring out their needs.
And all these transfers that I'm talking about, over 2,000 crore rupees, they were all digitally through direct benefit transfer. Money was paid into their accounts. So all this, if I imagine the scale of it, the wheat procurement, the mustard procurement, lakhs and lakhs of tons of wheat and mustard, and the payment for each lot made to every farmer directly in their bank accounts. That's incredible. That's incredible. The farmers who got it 15 days late, but not a word of murmur, no dissent. Because the farmers knew from the examples of others, they would get an SMS which would tell them their money has been sanctioned and it will go to this account 3 days later, 4 days later, whatever. So over 18,000 crore rupees worth of payment was made to farmers directly. And the man is so inspiring, my last sentence, the man is so inspiring that you cannot imagine that the funds were gone, there was no inflow, there was no income coming, we never stopped anybody's pension. Many of you know that he actually went ahead and said that he will pay double the salary to the doctors and the paramedics during the corona period. And nobody's pay was stopped. At that point of time, when there was such huge financial distress, he made an appeal to the farmers, to the students. I remember one of his YouTube videos. He said, I'm appealing every single student that please donate something, even if it is 5 rupees. Please donate something. Everybody was paid their pay. He said, I'm not putting any cut, but if you want to take your pay, you have to press the button. Then you have to say, what is it that you would like to donate? And he uses such behavioral economics principles in that, which is you could choose, the default menus would say 10%, 50% to 10%, 5% for the farmer, I remember 1%. And if you have to give 0, then you actually have to write 0 down. And he told me one day, he says, look, I don't believe that somebody actually writes 0. By the time he writes ZE, he will say, okay, let me come back to 1 only and let me give at least 1%. So those kinds of, nudge, as they say in behavioral economics, how to nudge a person into doing the right and how to have the courage, even in such stressful times, to keep the common good in view and do the right thing. So you could not have found a more amazing person to inspire you at this occasion. I'm sorry for having taken a wee bit longer than I should have. That's essentially because I came unprepared, but I don't want to stand between you and him, Mr. Manohar Lal. Thank you. Thank you so much for the wonderful introduction, sir. Now I would request Professor Dheeraj Sharma, Director IIM Rohtak, to deliver the welcome address. Namaste. Good afternoon. It is indeed always a great pleasure and honor to have the presence, the gracious presence of our Honorable Chief Minister, who has been the motivating force in this state for the progress of the state in various dimensions, including education. I have had the distinct privilege of spending more than my share of time with the Honorable CM on a few occasions. And I'm so thankful to him that again, despite his busy schedule, he has decided that he will come and talk to young students like yourself. We are grateful, sir. Always. Thank you. Our institution, IIM Rohtak, is amongst the second generation of IIM, sir. The first generation being A, B, C, Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, Lucknow, and then Indore and Kozhikode joined about 25, 30 years ago. We were started about 10 years ago, where the 7 IIMs were envisaged. Then 5 years ago, now 6th year, another set of IIMs were envisaged. They are called the 3rd generation. Amongst these 14 IIMs, which were started post 2009,
I am very proud to inform to you that IIM Rohtak is leading the way. We are probably the only IIM today which is financially in a position to not take any money from the Ministry of Human Resource Development for last 2 years and sustain in all aspects, including a recurring, non-recurring and capital expenditure. We do not hope to stop our growth. As a matter of fact, even during the COVID crisis, our batch size has grown by 10%. And we are increasing our batch size in the IPM program, which is our integrated program, which IIM Rohtak is the only institution which has a BBA MBA program. IIM Indore has a BA MBA. We're the only one which has a BBA MBA. There, the batch size is going to increase by 33%. So therefore, in this state, under the able supervision, you have created an enabling environment for us to grow and prosper. Many people have different perceptions of Rohtak. Many people have different perceptions of Haryana. But the testimony to the strength of our institution and Haryana is that today we have individuals from 24 different states who have agreed to come here and take education. This, I believe, stands no doubt amongst all the second and third generation IIMs particularly. Another very important aspect here today is the ambiguity surrounding the new batch. As was mentioned by PSCM sir, that all of you are unique generation. You would have never imagined in your life that you would be doing an orientation, then induction, and classes online. This is unique. Nobody had anticipated. But with anticipation, with ambiguity, with uncertainty comes opportunity. In my view, every 25 to 30 years, one generation, there is something called a disruptive innovation. There are three kinds of innovations: continuous, discontinuous, and disruptive. Disruptive innovations are the ones which alter the way we function, completely alter the way we think, alter the way we consume. In my view, the last major disruptive innovation was 25 to 30 years ago, was commercialization of information. It has resulted in the way we function. It has resulted in the way, changes in the way we consume, changes in the way we think. There are numerous research studies, sir, which indicate that individual focus span has reduced significantly owing to availability of information via internet. As a matter of fact, the new generation of tennis stars has not emerged because the new generation of tennis stars has now lesser focus and lesser attention span. The point I'm trying to make is that this was a disruptive innovation which created trillions of dollars of economy, trillions of dollars of trade, but at the same time resulted in the changes in physiological, psychological, emotional levels of all people across the world. Now, COVID, I believe, is in the same arena. COVID-19 provides an opportunity. In my view, going forward, you will have organizations which will be selling COVID-resistant clothing, at least pandemic-resistant clothing. You will have organizations which will be selling pandemic or COVID-resistant services. There will be organizations which will be offering services in restaurants which will be COVID-free. As a matter of fact, we already have IT companies which are charging 1/3 premium on their previously offered services for providing you COVID-free environment. We will hope that COVID will usher a new era of economy and economic reforms. And Haryana, under the proficient stewardship of our Chief Minister, Shri Manohar Lal, will lead the way in providing us an opportunity to excel and grow exponentially in the years to come. I am very proud to inform you, sir, that IIM Rohtak, during the COVID crisis, took advantage of being a residential campus, and we had all our researchers present on site, and therefore we were able to present a paper on agriculture procurement, which is now being used by many states. We had a paper on migrant labor. We were the only institution which conducted the largest migrant labor survey of 12,000 migrant labor across the country, and we provided significant inputs to the union government.
We also did a paper on financial markets, which is now being looked into. We've also done significant research in the domain of blended education, a paper which has been shared with the government, and we'd be happy to make a presentation to your government as and when needed. Attraction of foreign investment, communication during crisis, and segregating pandemic crisis from normal crisis in terms of social media and communication at various levels is a 6th paper, the compendium which, sir, and will be sent to the Union government and also to Haryana government very soon, sir. We are the only institution, as a matter of fact, which has done such diverse research, sir. And I hope that our inputs in tracking individuals who had COVID and providing them tracking facilities has now been used as one of the many inputs in creation of Arogya Setu app, which is now being used across the country. We are grateful that God has given us an opportunity to host you in this crisis and host your eminent researchers in IIM Rohtak who continue to interact with you. Sir, most people say that online education does not result in significant interactions. Therefore, we have built 25% additional interaction time just dedicated for discussions. So normal classes will happen. Whatever was the normal duration of a course, 25% additional time has been built for conducting purely discussions so that students can have free-flowing ideas on the topics which are covered in those courses. Second, sir, we have assessment after every single 1 hour, 15-minute session, sir. You will be delighted that this is the only institution which is assessing students after delivery of every single academic session. Therefore, the cumulative advantage can be taken, the learnings can take place, and we can at least, if not better, at least have the same level of learning as we were at face-to-face. Given that this is a new normal, and I hope that all of you will take advantage of technology to learn, self-learning, peer learning, and instructional learning. All three must come together for you to take advantage. But as is said in the traditional books of Indian theology, and also in the Western thought, there is no such thing as external learning if you do not have the willingness to learn. You must first exhibit willingness to learn. You must exhibit your promptness, your preparedness. So if you are unprepared, no learning can take place. So I submit to you that you must first encourage yourself, stay motivated, and have that burning desire to learn and excel. And only the curious will learn. My job here is to pique your intellectual curiosity and make you a better person, a better individual, and have better thought, as a result of which you can become better citizens of this great nation. Thank you, sir. Thank you again. Thank you very much, sir. We are grateful and we are much obliged to have, sir. Thank you and Jai. Thank you so much, sir. Now, I would like to request Professor Dheeraj Sharma to welcome our Honorable Chief Guest with a token of appreciation. Thank you. Grateful, sir. Thank you. Thank you so much, sir. I would now like to invite our Honorable Chief Guest, Shri Manohar Lal to address the students at this occasion. Friends, you are students of management and progressing ahead to become the masters of management. Today, I'll give you a task of management that you hear me in English, you hear me in Hindi and make yourself understand in English. Would we do? Chalega? Yes, sir.
Yes. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। Yes. आई एम Sir. रोहतक के हमारे निदेशक श्री धीरज शर्मा जी, डीन श्री एस.के. पांडे जी, उपस्थित सभी हमारे शिक्षकगण व विद्यार्थीगण, आज हम लोग इतना दूर बैठे हुए और परस्पर आपस में मिल भी रहे हैं। देखा जाए तो इस प्रकार का कार्यक्रम ये भी एक मैनेजमेंट का ही उदाहरण हो सकता है कि एक अच्छी मैनेजमेंट के नाते से आज इस समय इस संकट में इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मिलते हैं। मैं आप सब लोगों को सर्वप्रथम इस कार्यक्रम में उपस्थित होने पर और IIM के विद्यार्थी होने के नाते से वहां प्रवेश लेने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। निश्चित रूप से एक अच्छे नागरिक के नाते आप लोग इस संस्थान से अपनी पढ़ाई पूरी करके निकलेंगे, क्योंकि इस संस्थान ने इतने कम समय में जितना बड़ा नाम कमाया है ये उल्लेखनीय है। मात्र 10 वर्षों में आज हमारा स्थान देश के अच्छे मैनेजमेंट शिक्षण संस्थानों में ये हुआ है और हम शोध कार्य में तो भारतवर्ष में 5वें स्थान पर इस संस्थान को गिनते हैं। तो इस प्रकार के संस्थान के साथ आपका जुड़ना, जहां लाखों लोगों ने संस्थान में आने की इच्छा प्रकट की होगी, उसमें से कुछ 100 विद्यार्थियों के नाते से आपका जो यहाँ आने का एक भाग्य मिला, सौभाग्य मिला, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। एक विषय और, क्योंकि हरियाणा की बात से जुड़ी बात है तो इसलिए मैं आपको उस बात के लिए बधाई देता हूं कि जो सबसे पहला बैच था इस संस्थान का, शायद 2010 का बैच था, तो उस 2010 के बैच में जो रेशो थी लड़के और लड़कियों की संख्या मात्र 9% थी और जो इस बार मुझे पता लगा है कि इस बार के बैच में ये संख्या 65% है। Is it so? 69. वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आई अप्रिशिएट दिस थिंग कि जहां हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान ये लिया है, तो उस नाते से इस शिक्षण संस्थान में प्रत्यक्ष उसका इतना बड़ा एक सफलता का उदाहरण हमको मिल रहा है, इससे वास्तव में मन में एक खुशी होती है। हम लोगों ने 267 विद्यार्थी मेरे सामने हैं और ये विद्यार्थी उन 1,60,000 लोगों ने जिन्होंने अप्लाई किया था उनमें से यहाँ चुन करके आए हैं। तो ऐसे आप प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी यहाँ हैं, जिस प्रकार के इस नवाचार के पाठ्यक्रम के प्रबंधन के माध्यम से आप ये शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। इस IIM का जो एक इतिहास ये भी बन गया है कि यहाँ पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी 100% प्लेसमेंट यहाँ से होती है। जहाँ से 100% प्लेसमेंट का उदाहरण बनता है, यहाँ का इतिहास हो गया है, तो निश्चित रूप से देश भर में विद्यार्थियों को यहाँ की चॉइस ये निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो ऐसे संस्थान में आप आए हैं और आप भी अपनी पढ़ाई में जब आगे बढ़ेंगे तो आपको एक प्लेसमेंट के नाते से तो कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन हम लोग एक बात का ध्यान रखें कि यहाँ हम आए हैं पढ़ाई के लिए, केवल रोजगार के लिए या अपना कोई प्लेसमेंट हो जाए इसलिए हम आए हैं, इतनी सोच मात्र पर्याप्त नहीं है। क्योंकि हम लोग जिस मिशन को सामने रख करके चल रहे हैं वो मिशन हमारा व्यक्तिगत ना होकर के कहीं एक बड़ा मिशन, सामाजिक मिशन ये भी बनना चाहिए। और हम लोगों को एक अच्छे नागरिक के नाते आगे बढ़ना है। तो देश के प्रधानमंत्री ने जैसा अभी आह्वान किया कि ये देश आत्मनिर्भर बने, तो आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हम युवा शक्ति का जो एक योगदान है वो पूरा उसमें होना चाहिए। आत्मनिर्भरता के जो 4 एक फैक्टर्स उसमें बताए गए, उसके अंदर एक बताया गया इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो गवर्नमेंट्स कहीं भी कितना भी बना सकती है। फिर बताया गया सिस्टम्स भी हम उसको अपने खड़े कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। आप सब लोग लगेंगे, बाकी लगेंगे, एक मैनेजमेंट के सिस्टम्स खड़े हो जाएंगे। और फिर है इकोनॉमी।
अपनी नीतियां ऐसी बनाएं, पारदर्शी हम बना करके इकोनॉमी को भी अच्छा बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और धीरे धीरे इकोनॉमी आगे बढ़ भी रही है। लेकिन जो चौथी चीज बताई उन्होंने वो था डेमोग्राफी, अर्थात हमारी जो डेमोग्राफी है, हमारा जो समाज है, हमारे जो लोग हैं, उनका भी आत्मनिर्भरता में कितना ज्यादा उपयोग हम कर सकते हैं, उसके लिए भी हमको योजनाएं प्लानिंग बनानी होंगी। तो हम भले ही मैनेजमेंट के एक संस्थान के साथ जुड़े हैं, लेकिन हम किस प्रकार के नागरिक बने, मैं IIM की फैकल्टी को, खास करके हमारे निदेशक श्री शर्मा जी को जरूर कहूंगा कि एक सिस्टम ऐसा बनाए कि हमारा युवा इसकी दिशा ये इस देश और समाज के साथ जुड़ करके चले, ताकि मैनेजमेंट का कोई भी जो गुण है वो देश हित में कैसे उपयोग करे। वास्तव में मैनेजमेंट ऐसा विषय है, ये प्रबंधन, इसको बुरे लोग भी अपने तरीके से अच्छे प्रबंधन करके बुरे से बुरे काम भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, और इसी प्रबंधन के नाते से अगर अच्छे लोग होंगे तो अच्छे से अच्छा काम करके भी बहुत बढ़िया ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। एक प्रबंध व्यवस्था पर मैनेजमेंट के एक लेक्चर में हमें एक व्यक्ति ने उदाहरण दिए कि भाई इस मैनेजमेंट के माध्यम से भ्रष्टाचार को कैसा बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने उदाहरण दिया, आपने सुना होगा वो कि एक फाइल आई और उस फाइल के ऊपर लिखा अप्रूव्ड, और फिर उसी फाइल को बाद में लिखा नॉट अप्रूव्ड, NOT नॉट अप्रूव्ड, और फिर जब उसको करना था तो बाद में NOT के बाद आगे लगा दिया E कि नोट अप्रूव्ड। व्हाट इज दिस? दिस इज जस्ट मैनेजमेंट। अप्रूव्ड, नॉट अप्रूव्ड, नोट अप्रूव्ड। तो जिन्होंने मुझे बताया कि मैनेजमेंट और क्या होती है, मैनेजमेंट ये है कि हम कम साधनों में, कम समय में बढ़िया से बढ़िया उसको मैनेज करके उसका रिजल्ट आउटपुट कैसे ले सके। अब वो रिजल्ट आउटपुट हम अच्छी दिशा अगर समझेंगे, जानेंगे, तो देश और समाज के लिए एक अच्छा आउटपुट लेने का ये हम काम करेंगे। तो इसके लिए भी हमको जरूर हमारी शिक्षा में इसका कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। शर्मा जी ने ठीक बताया कि इस संस्थान ने बहुत से ऐसे सरकार के लिए, हरियाणा के लिए भी काम किए हैं, खासकर हरियाणा पुलिस और खाद्य संबंधित योजनाओं को जो सार्वजनिक नीति तैयार करनी थी, वो भी अपने इस कुशल प्रबंधन के नाते से IIM ने ही सरकार को करके दी है। तो इसका हमको भी उसका निश्चित रूप से लाभ हुआ है। मित्रों, हम लोगों ने इस प्रदेश में किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए, तो बहुत सी योजनाएं, राजेश कुल्लर जी ने बहुत सी बातें बताई हैं। अब वो सारी की सारी एक कलेक्टिव थिंकिंग के नाते से हम लोगों ने मिलकर की हैं, लेकिन बहुत से नए काम, नई पॉलिसीज, नए इनिशिएटिव्स ये हमने लिए हैं। अगर मैं इस कोरोना पीरियड की ही बात करूं तो इस कोरोना पीरियड के अंतर्गत 3 महीने में हमने 42 न्यू इनिशिएटिव्स लेकर के काम किए। छोटे बड़े कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन लगातार इस समय का लाभ उठाते हुए हमने नए नए इनिशिएटिव्स इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो किए। तो इस प्रकार के नए नए इनिशिएटिव्स लेने के लिए बहुत काम पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में किए। उसमें एक ये था कि युवा हमारा शिक्षित तो हो जाता है, शिक्षा यानी 3R एजुकेशन तो वो लेता है, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, दैट्स ऑल। डिग्री फॉर डेकोरेशन ही टेक्स एंड गो अवे टू द होम। बाद में उसको कोई पूछता नहीं है, लेकिन उसमें उसकी योग्यता बढ़ाने के लिए उसका टैलेंट, इसकी डेवलपमेंट किसी ने की कि नहीं की, उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। हमने आने के बाद एक नई यूनिवर्सिटी अपनी बनाई, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी एट पलवल, और उसमें हजारों लोगों को, अब स्किल डेवलपमेंट मिशन अलग से है, जैसे राष्ट्रीय स्किल डेवलपमेंट मिशन है, ऐसे में हरियाणा में स्किल डेवलपमेंट मिशन बनाया, जिसमें 80,000 लोगों को हमने पिछले कार्यकाल में उनको स्किलिंग उनकी करवाई है और वो लोग रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। तो ऐसे रोजगार प्राप्त करने के लिए स्किलिंग के काम को हमने प्राथमिकता दी। लगभग 790 ऐसे कोर्सेज हैं, यानी कहते हैं कि बालक के जन्म से और भगवान को जब तक प्यारा नहीं होता, पुरुष हो या महिला हो या परिवार पूरा का पूरा हो, ऐसे सब के लिए छोटे बड़े काम इतने ज्यादा होते हैं। उनकी एक सूची बनाई गई है, गुजरात में सूची बनी, वो 790 स्किल्स की लिस्ट बनी हो। अब 790 स्किल्स तो कोई एक संस्थान नहीं सिखा सकता, उसके लिए बहुत सा मल्टीपल एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। लेकिन इस मल्टीपल सिस्टम बनाने के बाद ऐसे स्किलिंग का के माध्यम से लोगों को तैयार किया जाए, अपना रोजगार करना, प्राइवेट नौकरी लेना, सरकारी नौकरी लेना। इस प्रकार इस मैनेजमेंट के माध्यम से हमने हरियाणा कौशल विकास मिशन में ये जो काम किया है, इसके ऊपर लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। जो विद्यार्थी टेक्निकल एजुकेशन लेकर के उनको काम नहीं मिलता,
उनको भी एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो ऐसे लोगों को हमने अप्रेंटिसशिप इसके माध्यम से काम देना शुरू किया, और जितना इंडस्ट्री हमारी है उन सबको एक परसेंटेज होती है कि इतनी इंडस्ट्री को इतने अप्रेंटिस रखने ही होंगे। 68,000 नौजवानों को अप्रेंटिसशिप के कोर्सेज करा करके और उनका अनुभव आगे बढ़ा, तो उनको भी प्लेसमेंट बहुत से तो उन्हीं स्थानों पर अप्रेंटिस लेकर के वहां अपना लग गए। तो इस प्रकार के सारे सिस्टम को हमने मैनेज किया। क्योंकि यहाँ जो कहा जाता है कि इतनी बेरोजगारी है, इतने लोग हैं, उनको कुछ मिलता नहीं है, अगर आप ठीक से मैनेज करेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। लाखों लोग फिर भी ऐसे बचे हैं जो ग्रेजुएशन कर गए, पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, +2 करके बैठे हैं, जिनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आगे पढ़ाई कर सके। हमने उनके लिए एक नई योजना बनाई, सक्षम युवा। अर्थात अपने युवा को कैसे हम सक्षम बना करके उनसे काम लें, और काम भी जब तक उसको कोई और दूसरी नौकरी नहीं मिलती तब तक एक इंटरिम बेनिफिट, क्या कि उससे हम 60 घंटे महीने में काम लेंगे, 100 घंटे महीने में काम लेंगे, और 100 घंटे महीने का 9,000 रुपया पोस्ट ग्रेजुएट्स को, 7,500 रुपया ग्रेजुएट्स को। यदि उतना देंगे तो कम से कम वो आगे अपनी पढ़ाई, अपने ट्रेनिंग, अपने जेब खर्ची, अपना सारा कम से कम पढ़ लिख करके अपने माता पिता के ऊपर बोझ न बने। तो इसलिए उन नौजवानों को हमने इस काम में लगा दिया, और ऐसे भी 1 लाख से ऊपर नौजवान इन सारे माध्यम से ये सहायता जो है प्राप्त कर चुके हैं। लगभग 850 करोड़ रुपया, इतनी बड़ी योजना हमने इसको बनाई है कि उसके अंदर हमने खर्च किया है। हम चाहते हैं कोई युवक खाली ना रहे। अगर खाली रहेगा तो उसकी कोई ना कोई खुराफात उसके दिमाग में आती रहेगी। कहते ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। वो कुछ ना कुछ एनर्जी उसमें होती है युवा में, तो वो एनर्जी अगर होती है, खाली बैठेगा कहीं ना कहीं ध्वंसात्मक बातों में, वो आगे बढ़ेगा। तो इसलिए इस सारे सिस्टम को भी हमने आगे बढ़ाया है। मेरा कहने का मतलब है कि ये सारे मैनेजमेंट के पार्ट हैं, और मैनेजमेंट के पार्ट में हमारे इतिहास की अगर बातें हम समझें तो हमने महाभारत के जो कहानी सुनी होगी, उसके अंदर भगवान कृष्ण ने जब दुर्योधन को पूछा कि एक तरफ तो मेरी सेना खड़ी है, एक तरफ मैं हूं, बोलो क्या लेके जाना है। तो दुर्योधन ने क्या समझा कि भाई भगवान कृष्ण तो अकेले हैं और इधर इतनी लाखों सेना है, तो लाखों सेना को ले जाऊंगा, मेरी जीत हो जाएगी। लेकिन भगवान कृष्ण की अपनी बुद्धि थी। अर्जुन ने कहा कि मुझे भगवान कृष्ण ही चाहिए, तो अर्जुन भगवान कृष्ण को लेकर चले गए। अंतर इतना था कि भगवान कृष्ण में तो बुद्धि थी, वहां वो एक बल के रूप में आगे बढ़ रहे थे। यानी ये बुद्धि बल है और वो संख्या बल है। संख्या बल लेकर के दुर्योधन लेके चले गए, लेकिन बुद्धि बल के आगे संख्या बल भी टिक नहीं पाया, और अंतर्गतवा गीता का संदेश भगवान कृष्ण ने दिया अर्जुन को, और महाभारत में पांडवों की विजय हुई। ये मैनेजमेंट ही है। अगर देखा जाए तो गीता के अंदर भी, अगर आप लोगों ने किसी ने पढ़ा हो कि नहीं पढ़ा हो, गीता में मैनेजमेंट के बहुत से ऐसे गुण ये बताए गए, सिखाए गए हैं। मैं बधाई देता हूं हमारे निदेशक शर्मा जी को कि IIM में गीता को आप लोगों ने पाठ्यक्रम में जोड़ा है। तो IIM में गीता को पाठ्यक्रम में जोड़ने का मतलब इतिहास भी हमारा मैनेजमेंट के गुणों से भरा हुआ है। और वैसे मैनेजमेंट के गुण तो हमारे भारतीयों में, विशेष तौर पर हरियाणवी में तो कहूंगा, ये अंदर कूट कूट के भरे हुए हैं। कोई पढ़ाई लिखाई ही मैनेजमेंट में काम आती है ऐसा नहीं है। अनपढ़ आदमी भी मैनेजमेंट के बहुत गुण जानता है। हमारे शब्द चलता है जुगाड़। कोई काम करना हो और कोई उसको टेक्नोलॉजी की बहुत बढ़िया कोई मशीनरी ना मिले, या कोई महंगाई के अंदर उसको कोई लगता है कि मेरी अप्रोच से बाहर है, तो अपना कोई ना कोई खेत में काम करने के लिए जुगाड़ बना लेता है, और जुगाड़ बना करके वो सारे काम कर लेता है जो बड़े बड़े मशीनरी नहीं कर पाती है। ऐसे जुगाड़ भी होते हैं। अनपढ़ लोग मैनेजमेंट के बहुत गुण जानते हैं, क्योंकि वो गुढ़े लिखे होते हैं, यानी पढ़े लिखे नहीं होते तो गुढ़े होते हैं। गुढ़े यानी एक्सपीरियंस्ड होते हैं। मैं आपको अपने जीवन की घटना बताता हूँ। मैं कॉलेज की पढ़ाई मैंने 72 तक की, प्री मेडिकल, इसके आगे पढ़ने का मुझे अवसर नहीं मिला। हमने मन में विचार किया जाकर के कोई बिजनेस करते हैं दिल्ली में। जब मैं बिजनेस करने के लिए गया तो हमने अपने पिताजी से, माताजी से, दादाजी, दादी जी सबसे आशीर्वाद लेने के लिए मैं आगे बढ़ा। दादाजी से आशीर्वाद लिया तो उन्होंने कहा बेटा क्या करोगे? मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे जाके दिल्ली में कुछ बिजनेस करूंगा। कहने लगे बेटा कुछ भी करो, सफल रहो, एक बात का ध्यान रखना। मैंने कहा क्या? कि अगर तुम्हारे पास 1 रुपया है तो बाजार से 1 रुपए से ज्यादा नहीं लेना, एक अपना, एक बाजार का 2 रुपए से ज्यादा काम मत करना। अब ये अनपढ़ हमारे दादाजी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, और वो बातें आज हमारे फाइनेंस मैनेजमेंट के
डेट इक्विटी रेशो बोलते हैं, डेट इक्विटी रेशो बोलते हैं इसको हमारे फाइनेंस के लोग। तो ये डेट इक्विटी रेशो 1962 में हमारे दादाजी की आयु लगभग 80 वर्ष की थी, अनपढ़ थे, उन्होंने हमको बता दिया। तो ये मैनेजमेंट जो होती है ये एक बहुत कॉमन सेंस की बात है। पढ़ाई लिखाई इसके लिए बहुत, यानी आज के युग में हमको वो करना ही पड़ेगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस हमको सीखनी पड़ेगी। देश और दुनिया में मैनेजमेंट की बहुत बेस्ट प्रैक्टिसेस ये लोग हमको बताते हैं, उसमें से हम सीखते हैं। आपको ध्यान में होगा कि एक बार रेलवे मंत्री उस समय के लालू यादव जी IIM अहमदाबाद पहुंच गए थे और उनका मैनेजमेंट में भाषण हुआ था। क्यों? तो उन्होंने क्या मैनेजमेंट बताया? उन्होंने इतना बताया कि ये रेलवे की इतनी अनयूज्ड संपत्ति पड़ी है, बेकार स्क्रैप पड़ा है, मैंने तो उठा करके उस स्क्रैप को बेच दिया और 20,000 करोड़ रुपया उसको डाल करके और रेलवे को जो घाटे में चल रहे थे प्रॉफिट में ले आया। दिस वाज द बेसिक एग्जांपल ही गिव इन दैट IIM एज फार एज आई नो। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर ये चीजें हमको बहुत लाभ देती हैं कि हम ऐसी छोटी छोटी चीजों को मैनेजमेंट स्किल्स के नाते से, मैनेजमेंट एक स्किल है और इस स्किल के माध्यम से हम किसी भी काम में उसका रिजल्ट बढ़िया कैसे ले सकते हैं, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। और कुछ चीजें ऐसी भविष्य के लिए भी हमारी जो संकट आने वाले हैं उसको देख करके भी हमको करना पड़ता है। आजकल बहुत प्रकार की मैनेजमेंट आ गई है। मैनेजमेंट में जहाँ आर्थिक मैनेजमेंट का विषय होता है, वहाँ मैन पावर की मैनेजमेंट का विषय होता है, वहाँ लाइफ की अपनी मैनेजमेंट का विषय होता है। अब लाइफ मैनेजमेंट में मानो हम सारा जीवन 100 साल की जिंदगी, 90 साल की जिंदगी, 17 साल की जिंदगी हमें क्या करना है। हमारे यहाँ इतिहास में लिखता है कि कभी हमारे व्यवस्था बनाई गई थी, कौन सी? आश्रम व्यवस्था। 4 आश्रम बनाए गए, 25 वर्ष एक, 25 दूसरा, 50 तक, 70 तीसरा, 100 चौथा। पूरी लाइफ मैनेजमेंट बना के रखी है उन्होंने। लाइफ मैनेजमेंट के साथ साथ हमको एनुअल मैनेजमेंट ये भी करनी पड़ती है कि किस साल में क्या करूंगा, ये मैनेजमेंट सबको करनी पड़ती है। उसके बाद डेली मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। जो टाइम मैनेजमेंट नहीं करेगा वो अपने जीवन भर, यानी पूरे दिन की दिनचर्या को खराब कर बैठेगा, उसको शाम को रात को आनंद नहीं आएगा मैंने कुछ किया कि नहीं किया। ये भी मैनेजमेंट है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट चल पड़ी है। वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट में हमने क्या प्रयोग किया यहाँ हरियाणा में? हमारे पास पानी का संकट है। उस पानी के संकट में से भी जो पानी है उसी का ठीक मैनेजमेंट किया जाए ताकि किसी को दिक्कत तकलीफ ना हो। एसवाइल का पानी हमको चाहिए, नहीं आ रहा। लखवार, किसाऊ, रियासी, अपना रेणुका डैम, इनका पानी 2-3 साल बाद आएगा। लेकिन इस पानी के संकट को हल करने के लिए हमने कहा जहां पानी ज्यादा जाता है, बाढ़ आती है और लोग चोरी करते हैं पानी की, उस पानी को रोक करके ऐसी टेल्स, लगभग 25 साल तक उन टेल्स पर कैनाल का पानी नहीं गया था। हमने पिछले 4 साल से उन कैनाल पर साल में 3 महीने 4 महीने ये पानी भेजने लग गए। 25 साल के बाद मैनेजमेंट किया और कुछ नहीं। अभी हमको ध्यान में आया 2 वर्ष पहले कि जमीन का पानी जो है वो निकालते चले जा रहे हैं। किसान जो है उसको बेदर्दी से निकाल रहा है। धान की बुआई करता है, उसको लगता है कि धान में मुझे 2 पैसे ज्यादा बचते हैं। हमने कहा कि देखिए धान की बचत की चिंता न करो, आप चिंता ये करो कि हमारा पानी कितना खर्च हो रहा है। 1 किलो चावल के ऊपर 3000 लीटर पानी लगता है पानी धान उगाने में। अब 3000 लीटर 1 किलो पानी के ऊपर हम लगाएंगे तो पानी की क्या स्थिति बनेगी? 2008 से लेकर 2020 तक 12 साल का रिकॉर्ड ये कहता है कि प्राय हरियाणा के हर ब्लॉक में पानी की जो डेप्थ है वो डबल हो गई है सब जगह। जहां 10 मीटर गहरा था वहां 20 मीटर हो गया, जहां 20 मीटर था वहां 40 मीटर हो गया, जहां 30 मीटर था वहां 60 मीटर हो गया। पानी का जो लेवल है इट्स गोइंग डाउन बाय डाउन, डाउन बाय डाउन। हमने उसके लिए कहा कि नहीं, धान बीजना बंद करो। धान की बजाय आप अल्टरनेटिव फसलें अगर लगाएंगे, हम आपको 7000 रुपया एकड़ भी देंगे, आपकी गवर्नमेंट भी करेंगे, आपकी फसल की बीमा भी कराएंगे। थोड़ा लालच देना पड़ता है। और साथ में ये भी कहा कि ये पानी आपकी विरासत है। जैसे जमीन विरासत होती है, हमको भी जमीन विरासत बाप दादा ने दी, हम भी आगे जमीन विरासत में अपने बच्चों को देके जाएंगे, लेकिन साथ में पानी भी देके जाएंगे। बिना पानी के जमीन देके जाएंगे तो ये बिल्कुल सूखी जमीन, रेतीली जमीन देके जाएंगे, अगली पीढ़ियों को गालियां देगी। अब ये मैनेजमेंट है। लोग थोड़ा बहुत नाराज भी हुए, हमने उसको राजी किया। उनको वेस्ट मैनेजमेंट के कितने विषय चल पड़े हैं।
वेस्ट टू बी मैनेज्ड, वेस्ट टू बी कन्वर्टेड इन एनर्जी। नहीं तो ये वेस्ट का डंप इतना ज्यादा हो जाएगा कि अंतोगत्वा वातावरण को खराब करेगा। एनवायरमेंटल जो दोष है, दूषित एनवायरमेंट में हमारा जीना दुभर हो जाएगा। इसके लिए सारी मैनेज चल पड़ी है। वेस्ट मैनेजमेंट का है, वाटर मैनेजमेंट का है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का है, टाइम मैनेजमेंट का, ये सारी मैनेजमेंट ये हमको एक एक करके और मैनेजमेंट का कोई एक प्रकार नहीं, आपको हो सकता है 4 प्रकार ऐसे भी ध्यान में आ जाए जो आज तक सुने भी नहीं होंगे कभी। ऐसी मैनेजमेंट भी करनी पड़ सकती है। तो इसके लिए नई रिसर्च, नई नई बातें ये भी हमको अपने जीवन में खोज के निकालनी चाहिए। मित्रों, ये जो कोरोना आया है, इस कोरोना ने हमारे इस पूरे काल को जो मैनेज चल रहा था वो मिसमैनेज हो गया। लेकिन कहते हैं कि जब चुनौती आती है उसको भी एक अवसर के रूप में उपयोग करना चाहिए। तो इस चुनौती को अवसर के रूप में जो उपयोग कर जाएगा वो एक सफल व्यक्ति है, और जो इसके अंदर निराश होकर के बैठ जाएगा, क्योंकि संकट तो जीवन में आएंगे। संकट एक अनिश्चित काल का एक फिनोमिनन होता है, और अनिश्चितता जो होती है वो जीवन का एक भाग होती है। जिसने इसको स्वीकार कर लिया वो कभी निराश परेशान नहीं होगा। अनिश्चितता है, आज हम ठीक ठाक बैठे हैं, कल क्या होगा कुछ मालूम नहीं है। भविष्यवाणियां करते हैं हम सब, बहुत फोरकास्ट होती रहती है, लेकिन फोरकास्ट से भी सब काम थोड़ी आती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अचानक कोई समस्या आती है। जिस व्यक्ति ने अपना मन का धैर्य नहीं खोया वो व्यक्ति सिस्टम को मैनेज करके आगे निकल गया। तो कोरोना के समय में भी हमने सारे सिस्टम्स को मैनेज किया है। हरियाणा में जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो हमने सब किया है। आप लोगों को भी इसको, इन समस्याओं में से जूझने के लिए, अपने आप को मैनेज करने के लिए अधिक से अधिक चीजों को अध्ययन करना पड़ेगा। फिर हमारे जितने भी फील्ड हैं, सेक्टर्स हैं, जो प्राय आर्थिक दृष्टि से बैठ गए, टूरिज्म है, हमारा होटल इंडस्ट्री है, एजुकेशन है, एजुकेशन में भी नए नए सारे प्रकार है। आज भी जैसे हम बैठे बात कर रहे हैं, एक डिस्टेंस जिसको कहना चाहिए मीटिंग के नाते से, तो लर्निंग, इसके भी नए प्रकार हमको बनाने पड़ेंगे। तो डिस्टेंस लर्निंग, डिजिटल लर्निंग, इसके नए नए मेथड ये हमको खोजने पड़ेंगे। आज सुबह मेरी जितने भी वाइस चांसलर्स हरियाणा के हैं, लगभग 49 यूनिवर्सिटीज हैं हरियाणा में, उन सब के वाइस चांसलर आज इसी प्रकार से मीटिंग हमने की। उसके ऊपर यही चर्चा हुई कि हमको लर्निंग के, पढ़ाई के, एजुकेशन के कौन कौन से सिस्टम, एग्जाम के कौन कौन से सिस्टम ये निकालने पड़ेंगे। उसके ऊपर बहुत चीजें खोज कर रहे हैं, उन सारी चीजों पर हम आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर के मेरा कहने का भाव यही है कि हम जिस टैलेंट के लोग हैं, इस टैलेंट के लोग हर प्रबंधन क्षेत्र के अंदर अपने आप को आगे बढ़ाएं। आत्मनिर्भर भारत में जो प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल की बात कही है, उसका अपना एक महत्व है। हम अपने देश में जितना ज्यादा अपनी प्रतिभा को निखार पाएंगे उतना इस देश की टैलेंट को बढ़ेगी, हमारा एक खजाना बढ़ेगा। उस खजाने के आधार के ऊपर इस देश के साथ हम देश में अच्छा काम कर पाएंगे। और दुनिया के साथ जो हमारा एक मुकाबला चल रहा है, उस मुकाबले में हमारी भारतीय संस्कृति का विचार क्या है? लिव एंड लेट लिव। लेकिन पश्चिमी सभ्यता क्या कहती है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में कमजोर को कोई जीने नहीं देता है। ताकतवर जो है वो कमजोर मछली को खाने की कोशिश करती है। लेकिन ये हमारा सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत हो ना हो, आज जो दुनिया करेगी, एक बार तो उसका मुकाबला करने के लिए हमने अपनी ताकत बढ़ानी है, तैयार रहना पड़ेगा। जब हमारी ताकत बढ़ जाएगी, हम कम से कम दुनिया में ऐसा नहीं करेंगे जैसे बाकी देश करते हैं। हम तो एक सामंजस्य, समन्वय, कोऑर्डिनेशन और पूरा विश्व उसमें शांति हो, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो ये विचार हमारा तभी कोई सुनेगा जब हमारी ताकत बढ़ेगी। अगर हम कमजोर हैं, वीक नेशन के नाते से हमारे विचार को कोई नहीं सुनेगा। हमें ताकत दूसरे को खाने के लिए नहीं बढ़ानी, लेकिन अपने विचार को
मजबूत करने के लिए इस ताकत को हमको बढ़ाना पड़ेगा, अपनी टैलेंट के माध्यम से, अपने गुणों के माध्यम से, हर दृष्टि से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। और कुल मिलाकर के इस चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए हमारी जो क्षमता है उसमें हम लगाएं। आप कल के नागरिक हैं, इस देश के निर्माता हैं। आपको आज इस अवसर पर मैं अपनी ओर से आपके जीवन में किस प्रकार से आप तरक्की करें, आगे बढ़ें, देश और समाज के लिए काम करें, इसके लिए मैं आपको शुभकामना देता हूं। आपने मुझे इस अवसर पर बुलाया, सुनना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। Thank you so much, sir. I would now request Dean Academics, Professor S.K. Pandey, to deliver vote of thanks. Thank you, Guneet. Thank you, Guneet. It is my honor and pleasure to extend the vote of thanks on the inaugural session of PGP Batch 2020-22. We are highly obliged to Shri Manohar Lal, Honorable Chief Minister of Haryana, for sparing his valuable time and sharing the experience of managing a state with the would-be managers. Your valuable advice of managing with values and thoughts of Indian management, which has been cherished over long, will remain the guiding principle for one and all listening to your address today. We would like to tell that our logo contains four Sanskrit words which says Gyanen Gunen Cha Prabandha, which means we also believe in the same philosophy that management should be both by knowledge as well as good human values. I am thankful to Professor Dheeraj Sharma, Director IIM Rohtak, for his visionary leadership and courage to take crucial decisions in trying circumstances. It is because of your vision, sir, that we are probably the first IIM in the country to start our PGP first-year classes on time and as per schedule. We also would like to thank the admissions committee, chairs, and the staff associated who have worked hard to bring one of the best represented and diversified batch in the country of IIM Rohtak. The faculty of IIM Rohtak also has played a crucial role in the selection of the batch, and their cooperation and selection deserves a special mention. I would also like to thank the ITRC and the PGP office, the chairs and the committee for the smooth conduct of the inaugural session of PGP 2020 batch. I believe that everyone plays his or her role in the success of the program and the institute. Hence, I, along with Dean Research and Executive Education, would like to thank all members of the IIM Rohtak community and acknowledge their contribution in the success of the program. Finally, I congratulate the PGP Batch 2020-22 and their parents for making it to our prestigious institution. Last but not the least, I would like to thank the Almighty for allowing the possibility of interaction with learned souls so that we may learn from each other. I end my vote of thanks with this Sanskrit verse. Sahana bhavatu, sahano bhunaktu, sahaviryam karvavahe, तेजस्विना अवधीतमस्तु मां विद्विषावे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। Thank you so much, sir. Thank you all of you for joining the inaugural session of academic session of batch 2020-22. I congratulate the batch and wish them good luck. Thank you so much, sir. Wish you all a good day. Thank you.